तो आज की गुड न्यूज़ ये है कि मेरा GoPro ठीक हो गया है, और नॉट सो गुड न्यूज़ ये है आज का जो मेरा प्लान है वो है गोल्डन ब्रिज के आसपास जाने का। यहाँ पे मेरे एक बहुत ही बुजुर्ग दोस्त बने हैं हॉस्टल में, उन्होंने बाइक रेंट की है। उन्होंने मुझसे पूछा अगर मेरे को चलना है तो। यू हैव हेलमेट? वन राइट, सो दे गिव 2 हेलमेट्स। ओके थैंक यू। तो हेलमेट मिल गया है, आप पहनते हैं और जल्दी चलते हैं। मेरी वजह से काफ़ी देर हो गई है इनको, मैं एक तो लेट उठा और ये वेट कर रहे थे। I am all set and the scooter is also setting up. So you want to go where? You're going to Golden Bridge, right? But I scared too hot lah. Maybe we go tomorrow morning or we go to the temple. जो कि एक लेडी बुद्ध का टेम्पल है। सबसे बड़ा स्टैचू जो लेडी बुद्ध का है वो इधर ही है। No, yeah. Okay. Very near here. Okay. Whenever you tomorrow want. Morning we go because very hot already. Yeah. Morning we keep the bike and then morning maybe 8 o'clock we go. Okay, sure. Whenever you want. तो इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, दोनों बीमार लौंडे घूम रहे हैं। इस साइड जो है उस साइड बीच है जहाँ मैं सुबह गया था और अपने GoPro का नाश करा के आ गया था। तो टेंपल में आ गए हैं और मेरे इस साइड जो है, इस साइड पूरा सी व्यू है। खतरनाक लग रहा है जो एकदम। ये है मेरे मलेशियन फ्रेंड। व्यू पॉइंट। और एक वो है जो स्टैचू लेडी बुद्धा, क्वानिंग। तो क्वानिंग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इंग्लिश में लेडी बुद्धा ट्रांसलेट किया जाता है। और जो व्यू है यहाँ का तो एकदम गजब है। यहाँ थोड़ा फॉरेस्टी सा एरिया है, उसके पीछे ओशन और उसके पीछे जो है बिल्डिंग्स है, और उसके पीछे जो है आपको शायद नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, पर उसके पीछे हल्के हल्के मेरे को माउंटेन्स भी दिख रहे हैं और फिर क्लाउड्स। मतलब सब कुछ कॉम्बिनेशन लाइन से लगा हुआ है, पूरा बुफे लगा हुआ है यहाँ पे। और वो है एक पगोदा और इस तरफ है एक टेंपल जिसमें स्लीपिंग बुद्धा, एक स्टैचू है बहुत बड़ा जिसमें बुद्धा सो रहे हैं। डू यू वांट टू गो इनसाइड? Inside here? You can go. Nothing. Just okay. More things. Okay. The tourists will come round take photo today. So you are not taking any picture? I take many. Oh. You want me to take yours? No need. I take many. काफ़ी बड़ा है ये, हाइट इसकी। जो बुद्ध का जो स्टैचू है सबसे बड़ा, वो चाइना में है। लेडी बुद्ध का जो है वो ये है।
thin, very thin, very small. The quality is not good. तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फूड व्लॉगर बन गया हूँ. I want to try dim sum food, but not here, in the streets. So many things, huh? Yeah. The night market. Oh, so it's a street market. Is it near the Dragon Bridge? Yeah. Okay. इसमें शायद है चिकन. ओए होए होए होए. और ये पैक हो गया. ओए होए होए होए. ये फिर से पैक हो गया. ओए होए होए होए. ये दो हो गए. ओए होए होए होए. But don't try, No, Better no, no, eat no. bread, No. Eat bread. Now I scared can't, already. I can't eat this. Yeah, I think the water not so good, Yeah. Better eat bread, Be safe, How's it? Good? This one is the Hoa An. Hoi An. Old Town. Yeah, Hoi An. Old Town. How's the architecture there? Yeah, like that. It's a European architecture, right? Yeah, seems cool. Do you recommend going there? Nothing but have a famous bread like that, 30 QR. I mean the architecture. Nothing much. Nothing much? Okay. Can you give sauce? Yeah. Thank you. Not bad. Okay, so let's go now. These helmets are useless, you know. Huh? These helmets are useless. Oh, in Cambodia, if you didn't wear helmet, you got to fine $15. No, it just protects you from the fine, not not from any accident. No. If there is an accident, this thing will go off first. Kiki. Oh. Hi. And the fire thing also in Southeast Asian countries. I saw it in the salad. Those words are not common and I don't know. You can work there and you can see. So you always carry your helmet?